Hello everyone. Good morning one and all. Am I visible and audible? Please confirm my visibility and audibility everyone. सब लोग एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए मेरा विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी ठीक है या नहीं। हेलो अजय चंद्रा, सब लोग एक बार कंफर्मेशन दिए तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा। हाय लोकेश, हेलो विश्वनाथ, मधु, या डीपीपी इज देयर। मैं बोलता हूं आपको डीपीपी कैसा मिलेगा। हाय आदर्श, हाँ। सो बेटा आपको हर क्लास को डीपीपी मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये डीपीपी आपको कैसा मिलते हैं, आप हमारा पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करके, पीडब्ल्यू ऐप में फ्री कोर्सेस बोल के आपको एक टैब दिखेगा, वहाँ आप एनरोल कर लेना। वो फ्री कोर्सेस में आपको एक गेट क्रैश कोर्स ये सब डिटेल दिखेगा। वहाँ आपको ये क्लास पीडीएफ, मैं जो भी यहाँ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल्स सारे, ये भी मिल जाएगा, इसके साथ डीपीपी भी मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं, क्योंकि वो मिसयूज हो रहे बोल के हम ये कर रहे हैं। हमारा पीडब्ल्यू ऐप में फ्री कोर्सेस में आपको एनरोल करें तो आपको डीपीपी क्लास पीडीएफ दोनों मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, सो लास्ट क्लास में हम पाइथन फंडामेंटल्स में हिस्ट्री ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कशन किए थे। इनपुट एंड प्रिंट फंक्शंस कैसा यूज करना, कैसा प्रिंट करना हर डेटा टाइप को, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स से हम डिस्कस किए थे। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। तो आज क्या मिलने वाला है, आज हम पूरा ध्यान ऑपरेटर्स टॉपिक पे देंगे। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमको गेट एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बन सकता है ऑपरेटर्स से। इट हैज दैट करेज, ऑपरेटर्स टॉपिक हैज दैट वेटेज, हिंदी में क्या बोलते हैं, ताकत, वजन, राइट। अरे यार मैं कितना बार बोलूं, आपको पीडब्ल्यू ऐप में फ्री कोर्सेस में डीपीपी मिलेगा। हमारा ऐप डाउनलोड करके फ्री कोर्स के लिए रजिस्टर करो, आपको मिलेगा डीपीपी। चलो, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन, देन we will focus on each type of operator, then we will move on to this operator precedence and associativity topic. सब लोग आप ध्यान देना बेटा, सब लोग आप ध्यान देके आज वाला क्लास सुनना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक से गेट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये इतना आसान नहीं है जैसा आप सोचते। और पाइथन का ऑपरेटर्स दूसरा लैंग्वेज ऑपरेटर्स जैसा बिहेव नहीं करते। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स बिहेवियर थोड़ा अलग होते, थोड़ा सा अलग होते, ठीक है। आदर्श जी प्लीज गाइड अनिन, हाउ यू गॉट द
डीपीपी एक बार गाइड कर लेना आदर्श जी प्लीज। ओके, सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो आज वाला क्लास हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज एन ऑपरेटर? व्हाट इज एन ऑपरेटर? अगर मैं आपको पूछूं ऑपरेटर डेफिनिशन क्या है, कैसा आप डिफाइन करोगे, तो आप कैसा डिफाइन करते हैं? ऑपरेटर, थोड़ा टंग ट्विस्टिंग डेफिनेशन रहता है इसको, जैसा कि एक वीडियो में मैंने देखा था, साउथ कॉमेडी वीडियो में एक वाइवा क्लास में एक पूछते व्हाट इज ए प्रोसेस, तो स्टूडेंट बोलते ए प्रोसेस इज ए प्रोसेस विच प्रोसेस द प्रोसेस करके। ऐसे ऑपरेटर का डेफिनेशन भी थोड़ा बहुत ऐसी लगता हमको, पहली बार सुने तो। क्या है ये डेफिनेशन? ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ये थोड़ा टर्म्स सिमिलर लगता, सिमिलर साउंड भी सिमिलर है, थोड़ा हमको कंफ्यूजन होते। तो वो कंफ्यूजन दूर होने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लीजिए मैं एक छोटा सा ऑपरेशन करना चाहता हूं, x मल्टीप्लाइड बाई y। यहां एक्स वाई क्या है? एक्स वाई आर ऑपरेंड्स। ये ऑपरेंड्स पे क्या ऑपरेशन चल रहे? मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑपरेशन चल रहे। सो मल्टीप्लिकेशन को हम ऑपरेशन कह सकते। कौन सा ऑपरेटर ये ऑपरेशन कर रहे? दिस स्टार ऑपरेटर ए ऑपरेशन कर रहा। सो दिस स्टार ऑपरेटर परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन एक्स एंड वाई ऑपरेंड्स। अब कौन सा ऑपरेंड है, कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेशन है, क्लियर हो गया। नाउ ये ऑपरेटर्स का क्लासिफिकेशन लैंग्वेज के हिसाब से होते। तो हमारा पाइथन लैंग्वेज में व्हाट आर डिफरेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन? यस एवरीबॉडी, आपको क्या ऑपरेटर्स पता है? प्लीज लिस्ट आउट व्हाट आर द ऑपरेटर्स यू नो इन पाइथन। क्लासिफिकेशन बता दो। क्लासिफिकेशन बता दो बस। असाइनमेंट, अर्थमेटिक, ओके, रिलेशनल, लॉजिकल, गुड गुड, गो ऑन गो ऑन। आप कौन सा ऑर्डर में भी बोल सकते हैं, मैं एक ऑर्डर ले रहा हूं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये तो रेगुलर ऑपरेटर्स हम देखते। दो ऑपरेटर्स का टाइप स्पेशल है पाइथन में, वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स।
आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इसके साथ थोड़ा स्पेशल ऑपरेटर्स भी है, जैसा लैम्डा कह सकते, यूनरी साइन प्लस, यूनरी साइन माइनस, पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स, वो भी ऑपरेटर्स है ना। तो वो थोड़ा स्पेशल ऑपरेटर्स कह सकते, कभी कभी सेपरेटर्स बोल सकते। तो लैम्डा तो ऑपरेटर है, कीवर्ड है। सो these are what different operators we have. Now from these we will pick one by one and discuss. ठीक है, पहले मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करना चाहता हूं। सो व्हाट आर डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स? लॉजिकल ऑपरेटर्स, कौन सा ऑपरेटर को आप लॉजिकल कह सकते? विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ट्रूथ वैल्यूज। कौन सा ऑपरेटर ट्रूथ वैल्यूज पे काम करेगा? ट्रूथ वैल्यूज क्या क्या है? ट्रूथ वैल्यूज क्या क्या है बेटा? दो ही ट्रूथ वैल्यूज रहेगा, एक होगा ट्रू, दूसरा होगा फॉल्स। ट्रू, फॉल्स। आप कुछ भी इनपुट दो, आप स्ट्रिंग इनपुट दो, नंबर इनपुट दो, कंडीशन दो, कुछ भी दो, उसको ट्रू फॉल्स में ही इनपुट समझ के ये लॉजिकल ऑपरेटर इवैल्यूएशन करते। अच्छा ठीक है, तो वो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन सा है? एंड और नॉट, स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, तभी पाइथन इंटरप्रेटर उसको ऑपरेटर समझ लेगा, कैपिटल में नहीं। एवरी लेटर मस्ट बी इन लोअर केस। सो दीज थ्री आर सेट टू बी लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, तो ये कैसा काम करेगा ये समझने के लिए हम थोड़ा ट्रूथ टेबल एक बार फटाफट से ले लेंगे। शायद आप डिजिटल लॉजिक में या माइक्रो प्रोसेसर में कहीं दूसरा जगह पे आप शायद सीखा होगा। What are it? If there are two inputs x and y, x का पॉसिबिलिटी फॉल्स हो सकते, y भी फॉल्स हो सकते, या x फॉल्स y ट्रू हो सकते, और ट्रू फॉल्स हो सकते, दोनों ट्रू हो सकते। तो मैं ये x एंड y के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म किए तो मेरे को क्या निकलेगा? एंड विल प्रोड्यूस ट्रू ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर ट्रू। एक इनपुट भी फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। सो only when both inputs are true, then only output will be true, otherwise false. So x and y का रिजल्ट तो ये आएगा। सिमिलरली x और y का रिजल्ट क्या आएगा? और विल प्रोड्यूस ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज ट्रू। मतलब दो भी ट्रू हो सकते या एक है तो भी बस है। वन ऑफ द इनपुट्स इज ट्रू, आउटपुट इज ट्रू। सो फॉल्स फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू आएगा, ट्रू 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 आएगा। अब नॉट क्या है? नॉट इज लाइक ए नेगेशन ऑपरेटर। नॉट ऑफ y कर रहा हूं, आप x का भी समझ सकते। व्हाट इज नॉट ऑफ y? फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। जस्ट ऑपोजिट।
Got it? So this is what the truth table for logical operators. Now ये कैसा यूज होगा हमको, हाउ दिस विल बी यूजफुल? लेट अस सी. When our inputs are when the inputs are conditions or expressions, when the inputs are conditions or expressions, means let us suppose I take A value as 50, B value as 12, C value as 10. Okay. Now I would like to write result is equal to A less than B and B greater than C. Result 1 मान लो. Result 2 is equal to B greater than C or A greater than B. So what will be result 1 and result 2? Please tell me. What will be result 1 and result 2? What will be the output? आशीष शाह, AIML में पहले एल्गोरिथम्स तो सीख लो. जब आपको एल्गोरिथम क्लैरिफाई हो जाएगा वो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते. फॉल्स ट्रू. ओके, फॉल्स ट्रू आएगा. चलो देखते. ये 15 बी 12, सुन लेना आप. ये लेस देन बी, 15 लेस देन 12, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. आप अच्छा सा सुन लो. आप अच्छा सा सुन लेना. जब AND ऑपरेशन करते ना आप, फर्स्ट इनपुट अगर फॉल्स है, AND में फर्स्ट इनपुट फॉल्स है तो सेकंड इनपुट फॉल्स होने दो, ट्रू होने दो, आउटपुट क्या आ रहे? फॉल्स ही आ रहे. मतलब अगर फर्स्ट इनपुट फॉल्स है तो सेकंड इनपुट फॉल्स ही आएगा. तो सेकंड कंडीशन या एक्सप्रेशन चेक करने का कोई जरूरी नहीं. इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्क्यूटिंग. इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्क्यूटिंग. मीन्स दिस इज अप्लीकेबल विथ ओनली लॉजिकल ऑपरेटर्स, नॉट विथ एवरी अदर ऑपरेटर. ठीक है, आप समझ के याद रखना. व्हेन performing AND operation, when the first input is false, second input need not to be evaluated. So this need not to be evaluated. इवैल्यूएट किए तो भी परवाह नहीं, लेकिन टाइम वेस्ट है ना, क्योंकि वो ट्रू है तो भी
फॉल्स है तो भी रिजल्ट तो सेम ही होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा। अब ये देख लो, सो रिजल्ट 1 विल बी फॉल्स। नाउ सेकंड एक्सप्रेशन देख लो, b greater than c, 12 greater than 10, ट्रू। नाउ और ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल देखे तो when the first input is true whether the second input is true or false, आउटपुट तो ट्रू ही आएगा। when the first input is true, irrespective of the second input, output will be true for OR operation. That means there is no need to evaluate the second. So this also need not to be evaluated. ये भी शॉर्ट सर्क्यूट होगा। क्योंकि रिजल्ट कैसा तो भी ट्रू ही आएगा। So the result will be true. So what will be printed? False comma true. False comma true. Got it? Now in this AND OR operations, AND has more priority than OR. This is a high priority, this is a low priority. सर ये किसके लिए सर? अगर मैं ये लिख रहा हूं, ये इज इक्वल टू लेट्स से 5, b is equal to 3, c is equal to -2, print ये लेस देन और इक्वल टू b और b ग्रेटर देन और इक्वल टू c and c लेस देन और इक्वल टू a। प्रिंट b greater than a and c less than b or a greater than b. What will be the output? What will be the output? आदर्श मैं बताता हूं, थोड़ा पेशेंटली आप सुन लेना। आशीष, हाँ रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए कोड तो लंबा ही होगा ना। इसका आउटपुट क्या होगा बेटा? ट्रू ट्रू, ओके। बाकी लोग क्या बोलते हैं? आपको भी ट्रू ट्रू निकल रहे? देखो मैंने क्या बोला था, AND का प्रायोरिटी ज्यादा है, सो आप पहले AND ऑपरेशन कर लेना। मीन्स b ग्रेटर देन और इक्वल टू c एंड c लेस देन और इक्वल टू a कर लेना। 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, दिस इज ट्रू।
सो AND ऑपरेशन में हम फॉल्स है तो ही सेकंड ऑपरेंड इवैल्यूएशन स्किप करते, लेकिन अभी ट्रू हो गया तो सेकंड ऑपरेटर इवैल्यूएट करो। C लेस देन और इक्वल टू A, -2 लेस देन और इक्वल टू 5, A भी ट्रू हो गया। सो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू मतलब इसका ट्रू आ गया। नाउ यू डू और ऑपरेशन विथ A लेस देन और इक्वल टू B। हमको पता है एक तो ट्रू आ गया तो कैसा तो भी ट्रू ही आएगा, फिर भी चेक कर लो। 5 लेस देन और इक्वल टू 3 और ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ये तो ट्रू ही आएगा। सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? ट्रू। नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे, अंड पहले इवैल्यूएट करो, बी ग्रेटर देन ए, 3 ग्रेटर देन -3 ग्रेटर देन 5 फॉल्स। अंड में फर्स्ट इनपुट फॉल्स है तो सेकेंड इनपुट का इवैल्यूएशन का जरूरी नहीं, सो ये तो फॉल्स हो गया। और ए ग्रेटर देन बी, 5 ग्रेटर देन बी, ये तो ट्रू है। सो फॉल्स और ट्रू, ट्रू हो गया। सो व्हाट वुड बी द आउटपुट? ट्रू, ट्रू। क्लियर? सो यहां आपको प्रायोरिटी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बिना प्रायोरिटी करके और पहले करके तब अंड किए तो आपको ट्रू के बिना फॉल्स आ सकता है, तो पूरा जवाब रॉन्ग हो सकता है, इसीलिए। ओके, सो नाउ ये लॉजिकल ऑपरेटर एक्सप्रेशन या कंडीशन पे नहीं, अगर नंबर्स पे या स्ट्रिंग्स पे काम किए तो। लॉजिकल ऑपरेटर्स विथ नॉन कंडीशनल इनपुट्स, ये आप ध्यान रखना, इससे गेट क्वेश्चन बन सकता है। सब लोग लुक एट द बोर्ड, क्लोज ऑल द अदर एप्स, यू शुड हैव बुक विथ यू, पेन विथ यू, समझ लो। If suppose I write A is equal to 5, B equal to 3, C equal to -1, D equal to 0. Now I am writing I is equal to A or B or C. J is equal to B and D or A. K is equal to C or A and B. What would be I, J, K? Print I, J, K. इसका जवाब देना सब लोग। ट्राई गिविंग मी द आंसर फॉर दिस।
hurry up. Okay, look at the board, look at the screen. Your maths official, true, true, true. Ashish Shah, -1, 5, 5. Ajay, all true. Okay. What about you, Technova? Others? Anin, Shivani, Adarsh. चल, focus. लॉजिकल ऑपरेटर बिहेवियर, एक्सप्रेशंस या कंडीशंस दिए तो एक जैसा बिहेव करते, जब आप नॉन कंडीशनल इनपुट्स देते ना तब अलग से बिहेव करते. देखो फोकस. नाउ ये वैल्यू क्या है 5, B3, C-1. That means it is equivalent to 5 or 3 or -1. All are OR operators. OR operators are evaluated from left to right. So 5 or 3. सर ये 5 और 3 को कैसा मानना हम? देखो, एनी नॉन जीरो वैल्यू मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव. You take any value, positive या negative, that would be true. That would be true. Okay. Zero value, none, false. These will be false. We have predefined constant false, F with capital letter, none, N with capital letter, and value 0. These three are considered as false. इसके अलावा बाकी सब ट्रू ही समझ लेगा. अगर मैं स्ट्रिंग लेता हूं, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग को ट्रू समझ लेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग को फॉल्स समझ लेगा. ओके. Understand? So now 5 or 3, 5 means true, और अगर आप देखोगे ये 5 और 3 का रिजल्ट किसके ऊपर डिसाइड किए आप ट्रू बोल के? क्या भाई 3 चेक करने का जरूरी है क्या? 3 चेक करने का जरूरी है क्या बेटा? इज देयर ए नीड टू चेक द सेकेंड ऑपरेंड व्हेन द फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू? नो. सो ये इवैल्यूएट करने का जरूरी नहीं. इसका रिजल्ट तो ट्रू बोल के हमको पता है. किसके बेसिस पे आप ये इसका रिजल्ट डिसाइड किए? 5 और ये वैल्यू के बेसिस पे आप डिसाइड किए. सो ये वैल्यू 5 होगा, ट्रू नहीं.
5 असाइन करते, और -1 5 इज ट्रू, इसके साथ आप और कर रहे, ट्रू के साथ और किए तो सेकंड वैल्यू ट्रू होने दो, फॉल्स होने दो, रिजल्ट तो क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। ये ट्रू आप किसके बेसिस पे बोल रहे, 5 के बेसिस पे बोल रहे, मींस विच इज द decision making value, that value is what assigned, decision making value is assigned to the LHS. So I value will be 5, not true, not true, 5. यहां देखो B and D, B is 3, D is 0, 3 and 0 क्या होगा, फॉल्स होगा, मतलब 3 and 0 or 5. Now 3 is what, true, and 0 is what, false. So इसका रिजल्ट फॉल्स बोल के आप किसके बेसिस पे बोले, 0 के बेसिस पे बोले, इसीलिए डिसीजन मेकिंग वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सो इसका रिजल्ट 0 बन गए। अब और ऑपरेशन कर लो, ये इज व्हाट, 5। सो 0 और 5 ये क्या है, ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स, 5 मीन्स ट्रू। आप ट्रू बोल के किसके, कौन सा वैल्यू के बेसिस पे बोल रहे, 5 वैल्यू के बेसिस पे बोल रहे, इसीलिए ये भी 5 होगा। सो जे वैल्यू भी 5 असाइन होगा, 5 असाइन होगा। नाउ के, सी और ए एंड बी, वी नो फर्स्ट A and B will be evaluated. Five and 3. 5 means true and 3 means true. इसका रिजल्ट ट्रू बोल के आप कौन सा वैल्यू के बेसिस पे बोल रहे हैं, 5 के बेसिस पे या 3 के बेसिस पे। 5 ट्रू होके सेकंड ऑपरेंड फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा, मतलब सेकंड ऑपरेंड डिसीजन मेकिंग वैल्यू था। सो सेकंड ऑपरेंड का वैल्यू होगा, नाउ -1 और 3। -1 इज ट्रू, क्या आप बोलो फर्स्ट इनपुट ट्रू हो गया, सेकंड इनपुट क्या है चेक करने का जरूरी नहीं, क्योंकि इसका आउटपुट तो ट्रू ही होगा। कौन सा वैल्यू के बेसिस पे आप ये ट्रू बोल के बोल रहे, -1 के बेसिस पे। सो के वैल्यू -1 होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है बेटा, समझने को थोड़ा प्रैक्टिस से आपको क्लैरिटी आएगा। इन वन गो यू मे नॉट गेट द कंप्लीट क्लैरिटी ऑन दिस। बस आप ये याद रखो, decision making value will be the result, decision making value will be the result। एटलीस्ट थोड़ा आइडिया तो मिला, थोड़ा आइडिया तो मिला या नहीं। So output you will get 5, 5 minus 1. Please confirm you got some idea or not? Who learned it for the first time?
अभी अभी काउंट सीखे। आदर्श, कौन सा डिसीजन मेकिंग वैल्यू है ट्रू या फॉल्स बोलने को, वो चेक करो बस। 3 and 0 पे 0 डिसीजन मेकिंग था, 0 के बेसिस पे आप फॉल्स बोल के बोले, इसीलिए ये 0 हो गया। 0 और 5 का रिजल्ट ट्रू बोल के 5 के बेसिस पे बोले, इसीलिए इसका रिजल्ट 5 हो गया फाइनली। ठीक है, राइट। चलो अब हम, हाँ, ये नॉट ऑपरेटर, बस नॉट ऑफ ए ग्रेटर देन बी, नॉट ए लेस देन बी, नॉट ए नॉट बी करके जस्ट बिफोर बिफोर एनीथिंग you just keep NOT. That is the way to use. That is the way to use. Okay. Now bitwise and shift operators. What are bitwise and shift operators? These perform operation on binary digits. Binary digits का acronym bit, short form. So what are the bits we have in binary? 1, 0. So operators that perform operation on bits we call as bitwise operators. Shift operators are also subcategory of bitwise. So they also do operation on bits only. इसका भी ट्रूथ टेबल आप देखें तो थोड़ा बहुत आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का ट्रूथ टेबल जैसा ही लगेगा, बस वहां ट्रू फॉल्स दिखेगा, यहां 1 0 दिखेगा। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। व्हाट आर लॉजिकल बिटवाइज एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स? This is bitwise and pipe symbol, bitwise or, tilt symbol, bitwise not, cap symbol, bitwise XOR, less than, this is called left shift, greater than, this is what we say right shift operator. So these are different bitwise and shift operators we have. So इसका भी अगर हम ट्रूथ टेबल बनाए तो मान लो 2 इनपुट है ये भी, ये एंड बी, ये और बी, ये XOR बी, नॉट ए। ये का इनपुट ए एंड बी का पॉसिबिलिटीज क्या हो सकते हैं ट्रू फॉल्स में? बोथ कैन बी फॉल्स, मतलब सॉरी 1 0 में बोथ कैन बी 0, 0 1, 1 0, 1 1, and same like logical and, but form of input changed, or at least one input is 0, one input is 1, output is 1, otherwise 0. XOR, when both inputs are same, output will be 0.
0 0 same inputs, 1 1 same inputs, 0 1 1 0 different inputs, and not is what? Complement. 0 के लिए 1 होगा, 1 के लिए 0 होगा. So this is what truth table for A and B bitwise operators का. यस, पाइप सिंबल आदर्श, पाइप सिंबल एंटर की के ऊपर रहता, देखो एंटर की के ऊपर रहता. नाउ हाउ दिस वर्क, लेट्स सी with examples. Let I is equal to 23, j is equal to 14, k is equal to I and j, L is equal to I or j, M is equal to I XOR j. Okay, and n is equal to not of I. So what would be k, l, m, n values? What I told you, bitwise operators do operation on bits, binary values, but the given values are in decimal. So what we should do? Convert decimal to binary. So I when you convert into binary, it would be 16 plus 7, this is 23. 14 will be 8 plus 4, 12 plus 2, 14. So this is 14. Now when I do I and j, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, bitwise, column wise you should do the operation. 1 and 0 0, 0 and 1 0, 1 and 1 1, 1 and 1 1, 1 and 0 0. So this value is 6. Next, I or j, I is 1 0 1 1 0, j is 0 triple 1 0. OR operation, if at least one input is 1, output is 1, 1 1 1 1 0. So this would be 3 0 30. Now I XOR j, I XOR j, I is 1 0 triple 1, j is 0 triple 1 0. XOR, for different inputs output is 1. So it is 1 1 0 0 1. This value is 16 plus 8, 24 plus 1, 25. And finally, not of I. ये नॉट ऑपरेशन थोड़ा आपको मैं जो आउटपुट यहाँ बताता हूँ, ये थोड़ा आपको डिफरेंट आउटपुट आ सकता है. 1 0 1 1
1 जी जी सो डोंट वरी, वो थोड़ा प्रोसेसर के ऊपर रहता, क्योंकि प्रोसेसर्स पाइथन में एक्चुअली कितना डिजिट का नंबर है उतना ही डिजिट ले लेते, बट देर इज स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी सिस्टम। सो उससे अगर 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का वैल्यू लिए तो उसको कॉम्प्लीमेंट किए तो वो वैल्यू थोड़ा बड़ा या डिफरेंट होगा। सो इसीलिए आप ये नॉट का कैरेक्टरिस्टिक समझ लेना, वंस 0 होगा, 0 1 होगा बोल के। सो नॉट ऑफ आई इज व्हाट 1 0 1 1 1। एक्चुअली नॉट बोले तो वंस कॉम्प्लीमेंट एज पर सम सोर्सेस, टूस कॉम्प्लीमेंट एज पर सम सोर्सेस। प्रोग्रामिंग तो वंस कॉम्प्लीमेंट ही करेगा, बट मैंने बोल रहा हूं ना, थोड़ा कंपाइलर रूल्स चेंज करके टूस कॉम्प्लीमेंट भी करा रहे, इसीलिए ये नॉट का आउटपुट तो आपको सेम नहीं आ सकता होगा, डोंट वरी, वो थोड़ा प्रोसेसर के डिपेंडेंट है। सो दिस वुड बी 1 become 0, 0 become 1, 1 become 0, so this would be 8, or you can say actually -8 as you complemented. Anyway, now if I print them, what I get? K, L, M and N. 6, 31, 25 and 8. Am I clear? एक्चुअली -8 प्रिंट होना है। सुजीत, आपको ये ट्रूथ टेबल समझ गए? यू अंडरस्टूड दिस ट्रूथ टेबल? देन एज पर दिस ट्रूथ टेबल you should know how to convert decimal numbers to binary numbers. Do you know that conversion of decimal to binary? 23 converted into binary. How you convert? Divide with 2. 2 goes 5 times, 2 goes 2 times, 2 goes 1 time. So you will write 1 0 1 1 like this. Same way 14. Now AND operation you should do column wise. 1 and 0, 0, 0 and 1, so on like this. 1 and 0, 0, 0 and 1, 0, 1 and 1, 1, 1 and 1, 1, 1 and 0, 0. This value is back to decimal 6. Same way OR operation 31, XOR operation, column wise you should do. Yeah. So as per me, actually it should print -8 because you have complemented, the sign also will be complemented. This also becomes 1. So 1 indicates negative sign. So -8. Because the given value is 23 is positive. When you complement it, it becomes negative. Got it? How 31 is coming? That means you don't know binary to decimal conversion. 1 or 0, 1, 0 or 1, 1, 1 or 1, 1, 1 or 1, 1, 1 or 0, 1. So 5 ones decimal value is 31.
1 into 2 power 4 plus 1 into 2 cube plus 1 into 2 square plus 1 into 2 power 1 plus 1 into 2 power 0, 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. आप गेट एग्जाम के लिए तैयार हो रहे, आप थोड़ा फंडामेंटल्स स्ट्रांग होना है, प्लीज थोड़ा प्रैक्टिस कर लो. डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शंस या नंबर कन्वर्शंस, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एटसेट्रा. ठीक है. ओके. Now this I am giving for your homework. You do it and you can post your answer in my Telegram channel. Have you joined my Telegram group? If not, please do join. And you can post this homework question answer in the Telegram group. Which is Satya Sir PW. Okay, so the question is x is equal to 37, y is equal to 43, j is equal to 69. A value is x and y XOR j. B value is x XOR y or y I have written j, g लिख सकता हूँ. And c is equal to z or x XOR y. Now I want a प्लस, ओके, सम तो शायद सेम ही आ सकता है, a कमा b कमा c. Okay, do this and give your answer in the Telegram channel. So I am moving on to shift operators. What are different shift operators? Left shift, right shift. Left shift, right shift. How these shift operators behave? These also perform operation on bits only, because these are also type of bitwise operators. So these perform operation on binary values only. How they will perform? If you look at it, some variable you are shifting left by some number of positions or shifting right by some number of positions. What would be this equal to? This will be equivalent to 2. Left shift is equivalent to 2. That variable value multiplied by 2 to the power count. And right shift is equivalent to variable value divided by 2 to the power count. Divided by means it is integer division.
means only integer value you will get as quotient. You will not get 3.5, 5.2 like that fractional value. We will just discuss in a moment arithmetic operators. Okay, so you should use this double slash. Okay, now 1 minute आपको यहाँ precedence दूं. And has more priority than XOR than OR. So this is precedence. High priority, low priority. Okay. Now आदर्श यहाँ ध्यान दो, होमवर्क बाद में करो. You can do homework later. Focus in the class, everyone. Let us see some example. Let A is equal to 17, B is equal to 9, C is equal to A left shift 2, D is equal to B right shift 3. Print C minus D. What would be the result of this? टेक स्टार्टअप देखते यार, गेट लेवल तक कितना क्लासेस रहेगी उतना क्लासेस ले लेंगे. आपको पूरा पढ़ा के ही मैं गेट सिलेबस पूरा पढ़ाने के बाद ही ये एंड करता हूं. बट ये क्रैश कोर्स है, ये बात याद रखना आप. So what would be the output? Everyone, are you working on it? Shubhajit, 67. You are also not sure. Let's see. C is equal to A left shift by 2. That means 17 left shift by 2. What is the shortcut? Left shift is equivalent to multiplication with 2. So this is 68. Now B is 9. 9 right shift by 3 times. So this is equal to 9 divided by 8. It goes just one time. Don't say 1.25 या 125 ऐसा नहीं, 1. So C is equal to 68, D is equal to 1. So this would be 68 minus 1, 67. So the output would be 67. Got it? Okay. Look at it, please. Let's say x is equal to 0,034, y is equal to 0x 2a 5, z is equal to 0b
10110 Now print x left shift by 2 minus y right shift by 4 plus z left shift by 3. So what would be the output? Try doing this. इसका जवाब देने के लिए कोशिश करो. Hurry up. इतना टाइम? चलो, फोकस ऑन द स्क्रीन. आप शायद 34 multiplied by 2 square. How many of you have done like this? 34 multiplied by 2 square, 2a5 divided by 2 power 4. This multiplied by 2 cube. How many have performed as it is? This is wrong. This is wrong. Here, when you apply these bitwise or shift operators, this variable must be a decimal integer. So, when you got octal or hexa or binary, convert to decimal first. So, 34 which is in octal will be what in decimal? 3 into 8 power 1 plus 4 into 8 power 0. This is 24 plus 4, 28. 2a5 which is in hexa is what in decimal? 2 into 16 square plus a into 16 power 1 plus 5 into 16 power 0. This is 16 square, 256 into 2, 512 plus 160 plus 5. This would be 600
77 10 10 110 which is in binary. This will be 1 into 2 power 7 plus 1 into 2 power 5 plus 1 into 2 power 4 plus 1 into 2 square plus 1 into 2 power 1, which has ones only those positions I am taking. So it would be 128 plus 32, 160 plus 16, 176 plus 4, 180 plus 2, 182. Now substitute these values. So it would be 28 minus, no. Now it is 28 multiplied by 2 square minus 677 divided by 2 power 4 plus 182 multiplied by 2 power 3. So what would be this value? 28 into 4. 4 8s are 32. 4 2s are 8 plus 3 11 minus 677 by 16. 677 by 16. 42. This would be 42 plus 182 into 8. 1456. 1456. Now what would be this value? 1456 minus 7 plus 70. So this is 1456 plus 7070, 1526. So what would be the output? 1526. Is this clear? सबको 1526 ही मिला है. आप ऑक्टल पे नहीं करना, हेक्सा पे नहीं करना, शिफ्टिंग या बाइनरी पे नहीं करना, उसको डेसिमल कन्वर्ट करके, मतलब बाइनरी में ही करना है. ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए डेसिमल में लेना है. ओके, ये फॉर्मूला के लिए डेसिमल वैल्यू जरूरी था, इसीलिए मैं सारे वैल्यूज को डेसिमल में कन्वर्ट किया था. ओके, मजा आ रहे? कितना लोग ये कॉन्सेप्ट अभी अभी सीखे? शिफ्ट का मतलब तो शायद सबको पता होगा, लेकिन ऐसा ये फार्मूला सिर्फ डेसिमल वैल्यूज पे ही काम होता बोल के, ऐसा करना बोल के कितना लोग अभी अभी सीखे बेटा? हु लर्नड इट in our class, which is for whom it is the new learning. Good, good. Very good. Hope you are liking the way we are learning this Python programming language through examples. ये एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, ये तो गेट लेवल का ही एग्जाम्पल है ना बेटा. ये एग्जाम्पल गेट लेवल का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि आप देखोगे इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना, तब अप्लाई करना,
तब ही आपको आंसर निकलेगा। 1 मार्क को तो आ सकता है। चल, नाउ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। व्हाट आर डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? एडिशन, subtraction, multiplication, single slash, this is floating point division या fractional division कह सकते हैं, या क्लासिक डिवीजन भी बोलते हैं। डबल स्लैश, you can call it as a true division, या फ्लोर डिवीजन भी कहते हैं। डबल स्टार, this is exponentiation operator. These are different arithmetic operators we have. इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में आपको तो पता है, लेकिन मैं इधर थोड़ा आपको ये जानकारी देना चाहता हूं। वी नो इफ a is equal to 7, b is equal to 3, if I write c is equal to a plus b, it is a valid operation. If I say a is equal to 7, b is equal to something like gate. Now if I say a plus b, now it is invalid operation. आप स्ट्रिंग को नंबर के साथ कनकैटिनेट करना चाहते, स्ट्रिंग के साथ जब प्लस यूज करते ना, देन दिस विल गिव द मीनिंग ऑफ कनकैटिनेशन। So you cannot add a number with string. Same way, let's say a is equal to 14.25, b is equal to some 3 plus 4j, c is equal to 9, d is equal to a plus b plus c, या a प्लस बी माइनस सी, क्या मिलेगा? 14 प्लस 3, 17 माइनस 9, you will get 8 plus 4j. स्क्रीन क्लियर नहीं पूजा? सब लोग एक बार फिर से कंफर्मेशन देना, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल क्लियरली और नॉट? क्लियर है? ठीक है, क्योंकि यहां कॉम्प्लेक्स टाइप हैज मोर प्रेसिडेंस, सो सारे वैल्यू कॉम्प्लेक्स पे ही, कॉम्प्लेक्स टाइप में ही कन्वर्ट होगा। Only real parts will be considered. 14 plus 3, 14 plus 3, 17 minus 9, 8. A complex part ऐसी रहेगा, 8 plus 4j ऐसा आएगा।
Now my a is equal to 14.25, b is equal to 9, c is equal to a minus b और a प्लस b, ठीक है, d is equal to a प्लस b, ऐसा लिखा, मेरे को क्या आएगा? a minus b, 14 minus 9, I get 5.25, and d I will get 23.25. So when an integer and float are added or done operation together, float पे आपको रिजल्ट मिलेगा. ओके, सो एक स्ट्रिंग के साथ आप दूसरा नंबर, वो इंटीजर होने दो, फ्लोट होने दो, कॉम्प्लेक्स होने दो, वो इनवैलिड ऑपरेशन है. मतलब a is equal to 14.25, b is equal to 3 plus 5j, c is equal to gate, आप i is equal to a plus c लिखोगे, j is equal to b plus c लिखोगे, ये इनवैलिड ऑपरेशंस है बेटा. You will get unsupported type for the concatenation. A string can't be concatenated with the number. But two or more strings can be concatenated. अगर मैं बोलूं a is equal to gate, b is equal to exam, c is equal to 2025. Now if I write I is equal to a plus b plus c, j is equal to b minus c, यहां मेरे को एरर आएगा क्योंकि ये इनवैलिड है. You can't do subtraction between the strings, but addition you can do. Addition is treated as concatenation. So I का आउटपुट आएगा गेट एग्जाम 2025. ओके, मतलब स्ट्रिंग्स का बीच में आप कंकैटिनेशन कर सकते, कितना भी स्ट्रिंग लो वो वैलिड ऑपरेशन है. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ये स्टार, ये रेसिप्रोकल ऑपरेटर, और मेरे को यही टर्म पता है, कुछ दूसरा टर्म भी हो सकता है, वो तो मेरे को याद नहीं आ रहे. स्ट्रिंग्स के साथ अगर हम स्टार अप्लाई किए तो वो रेसिप्रोकेट करते. मतलब क्या है देखो, मान लो मैंने लिया str1 इज इक्वल टू गेट एग्जाम. ओके, str2 इज इक्वल टू str1 मल्टीप्लाइड बाई 3. मतलब str2 क्या होगा, str1 जो स्ट्रिंग है वो 3 बार रेसिप्रोकेट होते. मीन्स str2 अब क्या होगा, गेट स्पेस एग्जाम, इमीडिएटली गेट स्पेस एग्जाम, immediately get space exam. So this would be str2. अगर मैं
print length of str2 minus length of str1 लिखूं, मेरे को क्या आउटपुट आएगा? What is length of str1? Length of str1 क्या है? 1 2 3 4 space is also counted, 5 6 7 8 9. So this you have reciprocated 3 times. मतलब length of str2 क्या होगा? 27 होगा. So what would be length of str2 minus length of str1? 27 minus 9, that would be 18. So the right answer would be 18. टेक्नोवा, बस आप इतना ही लो यार. 14 plus 3 minus 9, this is what? 8. बस इंटीजर पार्ट ले लो, और ये तीनों में कॉम्प्लेक्स हैज मोर वेट, तो वो कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट ऐसी लिखोगे. समझ गए? हाँ, यहां हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कहते आदर्श, इसको हम कह सकते हैं रेसिप्रोकेशन. इट इज जस्ट reproducing the same string as many times as you give, right? Now this division, double slash and modulus, I think I have not written modulus here. Okay, modulus भी है. I think I forgot mentioning the types. Please look at this. If I write A is equal to 17, B is equal to some 4, and when I write C is equal to A slash B, D is equal to A double slash B, E is equal to A modulus B, what would be C, D, E values? If you look at it, the division performs operation as like mathematical division. 17 divided by 4, 17 को आप 4 से डिवाइड करोगे, it goes 4 times, 0.25. So you will get C value as 4.25, just like a regular division. But when you use a double slash, this is like programming division.
when numerator and denominator or dividend divisor, when both are integers, result also, quotient also will be integer. So what is the difference? Division performs division and return quotient in float form always. Double slash performs division and return quotient only as per the input type. If both are integers, then result will be integer. If both are non-integers or one of them is non-integer, result also will be non-integer, like that. And modulus, this also performs division and return remainder as result. And its type also depends on input type. So A double slash B will just produce 4. Why? Because it perform programming division. It just take 4. So this is a remainder, this is quotient. Double slash gives you quotient. As A and B both are whole numbers, result also will be whole number. Now E will give you remainder. So what would be the output? 4.2541. Okay. Now let A is equal to 17.6. B is equal to 4 or 4.0. C is equal to A divided by B. D is equal to A डबल स्लैश B. अगर मैं E लिखूं वो तो थोड़ा अलग टॉपिक होगा, मॉड, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन में जाएगा. नॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन अगर आपको पता नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए मैं मॉड फ्रैक्शनल वैल्यूज में अभी नहीं ले रहा हूं. What would be C and D? Hi Durgesh, good morning. Yes, tell me what would be the result.
सेम श्योर टेक्नोवा नहीं। अगर आप यहां देखोगे 17.6 को आप 4.0 से रेगुलर डिवीजन किए तो ये होगा, ये चलेगा 4 टाइम्स, so it would be 16.0, this would be 1.6 actually. When you put point here, this becomes 16 or 1.6. now again it goes 4 times, so it would be 0. so A value will be C value will be 4.4. लेकिन D कैसा काम करते हैं? 17.6 को 4.0 से आप डिवाइड करोगे, इट गोज 4 टाइम्स। बस as the input are in float form, output will be also in the float form, so this will produce 4.0. hence the output will be 4.4 4.0. okay. अगर मैं इसको -17 4 कर रहा हूं, -17 4 किए तो क्या आएगा? yes please. -4.4 -4 -1 -17 लिखा पूछा, -17.69 -17 लिखा, no issue, no issue. so -17 we know plus, when you take two numbers sign A and B sign, whether you do A divided by B or A /B, उसका साइन क्या होगा, A mod B का साइन क्या होगा? we know the sign can be negative, positive, negative, negative, positive, negative, positive, positive, right? When you do division and produce quotient, that is similar to mathematical division. So plus upon minus, minus upon plus, we know in maths same sign. So minus upon minus, plus is minus, minus upon minus is plus,
minus plus. But when you do mod operation, ध्यान से सुनो, पाइथन में मॉड्यूलस ऑपरेशन जब आप करते हैं ना, तब आप रिजल्ट को डिवाइजर साइन देना है. ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है. सो मॉड विल गिव डिवाइजर साइन फॉर द रिजल्ट. मतलब डिवाइजर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा. ये याद रखना, ठीक है. सो -17 डिवाइडेड बाई 4 विल गिव -4.25. This will give -4.0. This will be rounded off to, actually it is -4.25, no, this value is, so it has to be rounded off. When it was positive, it got rounded off to 4. When it is negative, it will be rounded off to the next integer, that means -5.0. मतलब आप ऐसा समझ लो, एक्चुअली ये /b किए तो ये 4.4 ही आ रहे, बट दिस इज राउंडेड ऑफ टू लोअर बाउंड 4.0. Here also it is rounded off to lower bound. -4.4 का लोअर बाउंड क्या होगा? ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव का लोअर बाउंड -5 होगा, पॉजिटिव का लोअर बाउंड 4 होगा. ये समझ ला. एंड E is equal to A mod B 1. What is the divisor sign? Positive. So this will give you 1. So its output will be -4.25. No. ये मॉड तो थोड़ा अजीब बिहेव करेगा. एक मिनट. A mod B. What will be A mod B? This will be for different signs. This will be B minus A mod B. When the A, B signs are different, then A mod B value will be B minus A mod B. So when you do what -17 mod 4, this would be 4 minus 17 mod 4. This is what actually 3, which 3 plus 3, 1, which one? Plus 1. Why? Because divisor sign is positive. And what is this one? Remainder. So now this would be 4 minus 1, 3. So you will get A mod B value 3. So इसका आउटपुट तो आपको -4.25 -5.03 आएगा. सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो गलत आंसर निकालते या गलत आंसर निकलेगा. इसके ऊपर थोड़ा सा आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ में आएगा. ये डिफरेंट साइंस के लिए ही है,
सेम साइन है तो उतना चिंता लेने का जरूरी नहीं, नॉर्मली ऐसा कर लो, ऐसा करके डिवाइजर साइन रिजल्ट को डालो बस। जीआरई एग्जाम मैं नहीं पढ़ाता हूं बेटा, जीआरई टीम अलग है। आई थिंक हमारा टीम मेंबर्स देखते होगा आपका मैसेज। आप गेट वाला जीआरई के लिए अलग चैनल है, वो चैनल पे अगर आप ज्वाइन हुए तो ऑफ कोर्स दिस इज ए मेन चैनल, आप वो जीआरई का चैनल ज्वाइन होके वहाँ अगर आप एक्सप्लोर किए तो शायद आपको मिल सकता है। ओके, एनीवे थैंक्स फॉर कमिंग टू दिस सेशन। नाउ दिस डबल इक्वल टू वर्सेस सिंगल इक्वल टू क्या है? दिस डबल इक्वल टू is what we say is relational or comparison equal to, while single equal to is assignment equal to. मतलब double equal to compare left and right results, left and right expression results. Written true if they are same or equal, false otherwise. But hmm? 17 4, अच्छा दोनों इंटीजर्स है ना, सॉरी -5 ही आएगा, -5 ही आएगा। मैंने सोचा 17.0 करके। Subjit, you are correct. Thank you. Now, this is single equal to just assign or copy right expression result to left expression. It will not return any true or false. It just copy RHS value to LHS. Okay. Now, this double equal to priority is more than single equal to. Double equal to has more priority, single equal to has less priority. Next point is what? Compound assignment. Compound assignment, or you can call this also as shorthand assignment. What is this? Expression 1
some operator equal to expression 2, if you write like this, this is equivalent to expression 1 equal to expression 1 operator of expression 2. What does that mean? Suppose I write a plus is equal to b, that means a is equal to a plus b. A slash equal to b, that means a equal to a slash b. X and is equal to y, that indicates x is equal to x and y. यहाँ आप थोड़ा ध्यान देना बेटा. If I write I minus is equal to j minus k, what does this mean? This is I is equal to I minus, this is this operator is applied for the entire right expression. So this would be I minus j plus k. यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ये माइनस के साथ. ओके, सो ऐसा असाइनमेंट ऑपरेटर दूसरा ऑपरेटर के साथ अगर हम लिखे तो इसको हम कह सकते कंपाउंड असाइनमेंट और शॉर्ट हैंड असाइनमेंट. देन दिस कंपाउंड असाइनमेंट तो हो गया. दिस मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स we will discuss. Membership operator is in, not in. इसका बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. मान लो a is equal to 12, 15, 10, 19. अगर मैं x is equal to 15 in A, B is equal to let's say 10, Y is equal to B not in A, print x comma y. ये रिजल्ट तो बहुत आप गेस कर सकते हैं. 15 in A true, so x will be true. 10 not in A, no, 10 is there, so false. ऐसा हम membership operators we will apply with collection types. Same way, identity operators. What are identity operators? is not. इसको भी हम ऐसा कह सकते a is equal to 11, 22, 33, b is equal to 22, 11, 33, c is equal to 1, 3, 5, 7, d is equal to 3, 5, 7, 1. Now if I write x is equal to a is b, y is equal to c is not b, we know this is a list. List is ordered collection, so ये ही ऑर्डर में है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा.
but they are in a different order, so that will return false. But set is unordered, so आप कौन सा ऑर्डर में दिए तो भी ये सारे वैल्यूज का सी वैल्यूज डी में है नहीं चेक करके आपको रिजल्ट देगा. सो इसका आउटपुट आएगा ट्रू. B is not B, C is not B, no, C is B. So इसका रिजल्ट भी false आएगा. So you will get, if I print x comma y, you will get what output? False, false. Okay? ऑलरेडी मैं तो क्वेश्चंस दे दिया है. मैं आपको अभी ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी बताता हूं. ऑपरेटर प्रेसिडेंस में डेफिनेटली सबसे पहले आएगा ब्रैकेट्स, यूनरी साइन प्लस यूनरी साइन माइनस. Okay, this will be the first set that has high priority. Then membership operators, then arithmetic operators में डिवीजन, मॉड्यूलस, मल्टीप्लिकेशन का सेम प्रायोरिटी है. एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम प्रायोरिटी है. उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का सेम प्रायोरिटी है. देन बिटवाइज एंड बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज और these relational operators. What are they? Less than equal, greater than equal, has more priority. Then equal to, not equal to, is not, in, not in has next priority. And then and or not, I think not यहाँ नहीं आएगा, यहाँ ही आएगा. And then assignment, compound assignments. इसमें एसोसिएटिविटी अगर आप देखें तो सारे ऑपरेटर्स का एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट ही होगा, एक्सेप्ट this exponentiation and assignment. Only these two operators sign will associativity will be right to left, except that all the other operators associativity left to right ही होगा. ओके, सो ये प्रेसिडेंस पे हम
डिपेंड होके एक्सप्रेशन सॉल्व करना। ओके, थोड़ा आप इस पे भी ध्यान दो, इस पे भी ध्यान दो। ट्राई डूइंग some own examples by taking some expressions, but remember this precedence, very important. Got it? So that's all for today. So we have discussed operators concept completely today. Hope you all got better idea, better in-depth knowledge, clarity on the Python operators topic. DPP आपको ऐप में फ्री कोर्सेस में क्रैश कोर्स को एनरोल करो, वहाँ आपको ये क्लास का PDF और DPP मिल जाएगा। हाँ, ये क्लास का शायद अपलोड नहीं हुआ होगा, ये क्लास के बाद अपलोड होते। ओके, दोपहर तक अपलोड हो जाएगा ये क्लास का DPP। फाइन, थैंक यू एवरीवन। होप एवरीवन लाइक्ड द सेशन एंड लर्न द कॉन्सेप्ट्स। आपको सीखने के लिए आज बहुत कुछ मिला होगा ये ऑपरेटर्स टॉपिक में। थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंट presence throughout the class. See you tomorrow. Till then, have a great time. And the homework question solution and answer you please post in the Telegram group. Okay? Thank you. Have a great day. Take care. Bye bye. Jai Hind.